Hi students, welcome back to the channel. In this video, we will be discussing about HTML anchor tag. So in this lecture series, this is our lecture number 7. So anchor tag is most commonly used tag in every web page in every website, right? So in this video, we will start with basic introduction section where I will tell you definition and some important concepts related to anchor tag. After that, we will discuss syntax and real life examples of anchor tag, and then we will move to the practical section where I will show you that how you can exactly run or exactly write this program in Notepad++ or simple Notepad. So let's move to the introduction part. So first of all, you should know that anchor tag, this is how we write the anchor tag. This is how we write the anchor tag. This tag always need to close. So we have opening tag and closing tag. Like in previous lecture, I have already told you that image tag, there is no need to close this tag. We don't have any closing image tag. But in case of anchor tag, we always need to close this. Remember this point, this is very, very important. So in case of anchor tag, it defines a hyperlink which is used to link from one page to another. In every website, in every web page, you can see some links like this. So anchor tag is the only tag that helps a designer, that helps a user to connect two or more web pages together and make it a complete website. So I will tell you how to run these tags. The most important attribute of a tag is the href attribute, which indicates the link's destination. Like for example, in previous lecture where we have discussed img tag, I have told you that if we use only img, then it does nothing, right? It is just to store the space, it is just to capture the space for the tag, but it is nothing without its source. So we always need to write img src where we will add the source or address of the particular image. Similarly, in case of a tag is nothing without href. So if we write just a tag, write something and then close a tag, it is just to capture the space for the tag, but it does nothing. Okay, and we always need to use a href is equals to double inverted commas and then close. Here we will write what the address of the web page that we want to link with this particular page where we are writing the code. So here a means anchor tag, href means hyper reference. Href means hyper reference. So remember this point. So by default, as you can see here, this is the link. In every website, here I am searching in Google ABC. So here, यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे लिंक्स हैं हमारे पास. आप कुछ भी सर्च करो, बहुत से लिंक्स आपको मिल सकते हैं. This is how a tag means anchor tag actually works. So here are some important points related to these tags. So by default, links will appear as follow in the browsers. So all unvisited links is link is underlined and blue. So जिन लिंक्स पे अभी तक हमने क्लिक नहीं किया होता है, वो लिंक हमेशा ब्लू कलर में आपको नजर आएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिंक्स जो हैं वो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं. दैट मीन्स ये अनविजिटेड लिंक्स हैं. आफ्टर दैट a visited link is underlined and purple. If we visit link यानी कि अगर एक बार हमने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया तो उसका कलर चेंज हो जाता है पर्पल. ये क्यों होता है? ये हमें क्योंकि पता चल जाता है कि we have already visited this site. Okay? And an active link is underlined and red. So जो एक एक्टिव लिंक होता है जिस पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, जिस पे ऑलरेडी हम विजिट कर रहे हैं, वो अंडरलाइन भी होता है एंड इन रेड कलर. So these 2 points I hope आप लोगों ने notice किया होगा. This is the basic thing, right? Now I will tell you that how you can run these tags. So this is the syntax of a tag, anchor, hyperreference. Okay, and after that
we need to add the address here. After that, link text, and we need to close the A tag. So now let's move to the Notepad++, where I will show you that practically how you can run these tags. So title of this web page would be anchor tags. Okay. So in the body section, suppose I use step by step A and A close, right? In between A, I told you we need to write href inverted commas इस तरह से. In between these inverted commas, we need to add the address of any web page. I'm just saving this, right? So here we have a tag.html. So this is our page, a tag.html. So as you can see, there is nothing in this page, right? So when I write, अभी मैं यहाँ पे link add नहीं करती हूँ. Before closing the a tag, if I write to visit my channel, click here. Okay, if I save this and refresh, when I refresh this, you can see this page. To visit my channel, click here. When I click here, पेज कहीं पे भी मूव नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमने इस टेक्स्ट को अभी तक यहाँ पे एड्रेस ही नहीं दिया है कि वेयर टू विजिट. ठीक है. सो अब यहाँ पे इफ आई वांट कि ये वाला पेज रन हो, सो इसका एड्रेस, जैसे हमने इमेज का एड्रेस यूज किया था, सिमिलरली वी नीड टू यूज द एड्रेस ऑफ दिस पेज. सो हाउ टू ऐड द एड्रेस? सो here is my PC. Just copy this section. What you need to do is just click here, copy and paste. Again slash and then name of the page. I have so many web pages already here, so I will add a result. So a result.html. Don't forget to add the extension if you are using any HTML file. Just save this and run, refresh. Click. You can see here, welcome to all about CSIT. This is our final output, right? So this is how it work. अभी देखो हमने इस पेज को ऑलरेडी विजिट कर दिया है. हमने इस पेज को ऑलरेडी विजिट किया है. सो इसका कलर पर्पल हो चुका है. जैसे मैं क्लिक करूंगी इसका कलर रेड हो गया कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि ये विजिटेड था, काम पे चल रहा था, राइट? एंड बिफोर एडिंग एनीथिंग, अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसका कलर पहले ब्लू था, राइट? सो यहाँ पे मैंने आपको यही चीजें बताई कि unvisited link is underlined in blue, visited link underlined in purple, active link underlined in red. Okay, so this is how ahref works, यानी कि anchor tag इस तरह से काम करता है. So if I want to add another link, if I want to another link, ahref is equals to, suppose I'm writing here next page, then close a tag. Okay, so now I will add here img. Okay, so I'm just using the same address, copy and then paste. So we need to add img.html. यहाँ पे ये इस तरह से काम करेगा. Just save this and then refresh. So first of all, you should add break row here. Copy. Okay, save and refresh. So this is next page. When I click
यहाँ पे हम देख सकते हैं image.html, ये वाला पेज हमारा ओपन हो चुका है, राइट। इस तरह से हम एंकर टैग में कोई भी चीजों को ऐड कर सकते हैं। सपोज इन जस्ट चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे गूगल पे जाकर के अगर मैं लिखती हूँ ऑल अबाउट CSIT, when I write this is my YouTube channel, okay, so I am just copying this particular URL, copy कर दिया, right, copy कर दिया and just paste it here in between these double inverted commas, just paste it here, save. I'm closing this page, I'm closing this page, and this is how it run. A tag, click here to visit this is how it work, right. Always remember one thing कि कुछ भी चीज अगर हम लिख रहे हैं तो उस चीज पे हमें काम करना ही है। Just close this, save and refresh. नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे एंड हमारा ब्राउजर हमें इस पेज पर लेकर आएगा। दिस इज हाउ एंकर टैग वर्क। सो आई होप आप यहां से समझ चुके हो कि किस तरह से हम डिफरेंट वेब पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। क्लिक टू विजिट माय पेज, save. I'm just closing this and this, open, click to visit my page. When I'm clicking this, so इस पेज पर हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये चीजें काम करती है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।